The 26th of July 2024 marked the 25th anniversary of India's hard-fought and proud victory against Pakistan in the 1999 Kargil War. On Kargil Vijay Divas, or a day to celebrate India's victory in Kargil, India's Prime Minister Narendra Modi visited Ladakh to pay homage to martyrs who protected the nation. The PM heard the Gaurav Gatha, or briefing on the Kargil War by NCOs, and visited Amar Sansmaran, the hut of remembrance. He also visited the Veer Bhumi and attended a Shraddhanjali Samaroh, or a ceremony to pay tribute to soldiers. Prime Minister Modi spoke on Pakistan's deceit at the time when India was making all efforts to maintain peace. He said that Pakistan has not learnt any lessons from history. पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। Besides, Prime Minister also witnessed the first blast of the Shinkulla Tunnel project in Ladakh virtually. Shinkulla Tunnel project consists of a 4.1 kilometer long twin-tube tunnel to be constructed at around 15,800 feet on the Nimmu-Padum-Darcha road to provide all-weather connectivity to Leh. Once completed, it will be the world's highest tunnel. Prime Minister Modi also spoke on reforms in the defence sector. He expressed happiness over the fact that India is now making its mark as an arms exporter as well. The PM also dwelled at length on the Agnipath scheme as one of the most crucial reforms undertaken by his government. अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। As a result of reforms in the defence sector, India's armed forces have now decided to stop importing more than 5,000 weapons and military equipment, while India's defence production has crossed 1.5 lakh crore rupees. डिफेंस के प्रोडक्शन में पिछले 10 वर्षों में आत्मनिर्भर हुआ है भारत। करीब 70% के आसपास हमारा जो रिक्वायरमेंट है डिफेंस का, वो आज भारत में ही बनता है। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आप सबने देखा डिफेंस के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका वैल्यूएशन आज एक बहुत हाई वैल्यूएशन पहुंचा है, और सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत में बने डिफेंस उपकरण आज 80 देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स डिफेंस के हो गए हैं। Prime Minister Modi also gave examples of progress and mentioned holding G20 meetings in the Union Territory of Jammu and Kashmir. He said that the government's focus is on infrastructure development and tourism. Cinema halls are also opening up. He noted that this heaven on earth is swiftly moving in the direction of peace and prosperity. With Fuzail Ahmed, Gautam Roy, DD India.